Shivani, nutrition expert from IntuiWell. Today I want to discuss a very common pattern that I often see in my practice. Women after 35 come and tell me, मेरे बाल बहुत थिन हो गए हैं. During menstruation I feel extremely low energy. Stamina पहले जैसा नहीं रहा या मुझे ज़्यादा ठंड लगने लग गई है. And when I check their blood reports, hemoglobin is perfectly normal. Here where we actually miss the early iron deficiency, because hemoglobin falls last or iron deficiency actually starts much earlier in the body's iron stores. So when we assess iron status, we just don't have to look at the hemoglobin alone. We should be looking at the full iron panel जिससे हमें clearly पता चलता है iron deficiency है या नहीं है. So there are basically three parameters. First one is ferritin, which reflects iron storage. Most lab reports says ferritin even around 15 micrograms per liter is normal. But clinically in women, we ideally want ferritin around 50 micrograms per liter or higher for good energy, hair health and metabolic function. तो अगर ferritin 20 या 25 आ रहा है, lab range के according normal हो सकता है, but the body is already in an iron deficiency state. Second parameter after the ferritin that should be assessed is transferrin saturation, which shows how much usable iron is actually reaching to the tissues. Lab की जो normal range होती है वो है 20 to 45%, but functionally we prefer at least around 30%. Below 20% means tissues are not receiving adequate iron. Third parameter is TIBC, total iron binding capacity, which reflects how strongly the body is trying to bind iron. जब बॉडी में आयरन कम होता है TIBC बढ़ जाता है. So values about 360 to 380 micrograms per deciliter suggest iron deficiency physiology. So basically low ferritin, low transferrin saturation and higher TIBC can clearly indicate iron deficiency even when hemoglobin is normal. Now once we identify this, the next step is how do we correct it? This is very important. सबसे पहले आयरन का सोर्स सही होना चाहिए and we have to understand there are two types of dietary iron. One is heme iron, which is best absorbed from animal foods like meat, fish, poultry and liver, and non-heme iron, basically the plant iron sources which need support for proper absorption. And for vegetarian Indian diets, the most iron dense sources are garden cress seeds जिन्हें हम हलीम या एलो सीड्स भी बोलते हैं, सेसमे सीड्स जो हमारे काले तिल होते हैं, रागी, मोरिंगा लीव्स, एमरंथ लीव्स या चोलाई, लोटस स्टेम्स, डेट्स एंड रेजिन्स बट इन मॉडरेशन. तो ये जो हमारा रूटीन का दाल, चना जो हम लोग सोचते हैं बहुत आयरन डेंस होता है, उससे ज़्यादा हाई क्वालिटी आयरन सोर्सेज हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आयरन हम ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़रूरी है. एंड फॉर द एब्जॉर्प्शन आयरन नीड्स विटामिन सी. सो ऑलवेज पेयर आयरन फूड्स विद लेमन, आंवला, गुआवा, एनी सिट्रस फ्रूट, टोमेटो और बेल पेपर. याद रखिए आयरन प्लस विटामिन सी इक्वल्स एब्जॉर्प्शन. थर्ड, स्टोर्ड आयरन का ब्लड में मूव होना होता है और इससे मोबिलाइजेशन के लिए हमें कॉपर ज़रूरी होता है. So regular intake of til, cashew, sunflower seeds, lentils, cocoa and whole grains actually supports iron mobilization. Fourth important factor is iron release from the foods needs stomach acid. So chai, coffee and antacids actually iron rich meals के आसपास हमें avoid करने चाहिए. थोड़ा लेमन या fermented foods before meals iron release improve करता है. And if taking iron supplements, take them on an empty stomach with vitamin C. Keep at least 2 hours gap from calcium supplements, milk, tea, coffee और caffeine beverages. बहुत बार आयरन इम्प्रूव नहीं होता सिर्फ इन टाइमिंग मिस्टेक्स की वजह से. So correcting iron deficiency in women is not just about raising the hemoglobin, it is about restoring iron stores and iron delivery to the tissues.